Shri Ravi Gupta ji, Ranveer Prasad, CGM of SBI, all esteemed dignitaries of today's conclave. We live in a post-Chandrayaan Yuga, as they call it now. And as was being mentioned about the landing on Chandrayaan yesterday after our monthly review meeting, I think there were more than about 35-40 of us, including several vice chairmen of development authorities, having a meeting at the Housing Development Board in the evening, and we were seeing it live. And as it landed, finally, Ravi Jain is here. I said, "Ek housing board shuru karte hai chand pe." So that's where we should now start to aspire. We live in the modern world where reality is fast changing. Even before we imagine things are, we have to try and catch up with what is happening in technology and how things are evolving. And this way, we see that as an aspiring country, we are now competing to become the top 3 economies globally. And definitely, as projections are, we will be there with the number 1 population that we have today, and with all the technology and the young generation that is coming to the forefront. What is heartening also to see is yesterday, I don't know how many of you noticed, ISRO, the scientists, they were all people like you and me. All people from, normal families who are scientists and who are aspiring. That is the change that has come up in this country, and to see that is very, very refreshing. It's not the suited, booted people from Princeton and Harvard who are sitting there and delivering, but people like you and me. And technology today is seeped across. That is what is the aspiring Indian today. And an aspiring Indian today is born somewhere in India, he studies somewhere else, he works somewhere else. And all these journeys in his life, he wants to stay somewhere. And possibly the joint family system that we were so used to has actually become nuclearized. That is what is generating this demand for housing. I saw a review we were doing of master plans. Across the master plans in UP, we think that, UP is very slow in terms of housing requirement and in terms of how we have evolved. But across the sectors, the residential areas in Uttar Pradesh, the provisioning in master plans, the targets are quite close to what was aspired for in the master plans, which is something of a revelation. Whereas we may not have, kind of looked at the greens and what was provisioned for the green and forestry areas. That has not actually taken off. Somewhere along the line, we need to recognize that our entire system of urban planning, which was built in the 70s with the experience of what a state and planning was in terms of its philosophical thinking of the 50s and 60s, that has to give way to what the 21st century and the 22nd century urban planning requirements are. That recognition, I think, is now dawning slowly upon the entire urban planning institutions. And planning, instead of becoming a regulatory tool, which is what it was so far, is now transforming itself into an economic tool. Planning and economic activity, therefore, has to run simultaneously in order for a regulation not to become a stumbling block in the growth of the economy. That is where, philosophically, I think we should all recognize the role of urban planning in today's emerging economy. As far as engines of growth, etc. are concerned, it's all well known. Data shows and tells us that, when we were growing up, when I was in college, I was told that a square block in Manhattan is more expensive than the entire GDP of India. That's where we started our country's growth from. Today, as a state, maybe a greater Mumbai GDP is more than the entire GDP of Uttar Pradesh. That is the power of the city to attract wealth and the power of the city to generate that wealth at that capacity. And all of us recognize that this has been
our entire human civilization all across, if you look at it, it has been urban centers which have driven growth, which have driven cultures, which have driven history. Even today, when we look at urbanization, the best shot of urbanization that you can see is the night light photographs that you see of the earth, how it has changed across decades. Even in India, the night light in terms of dots on India's map, if you look at 20 years ago and what it is reflecting today, is very much the growth story of the urban areas and the requirement of energy. Because the requirement of energy at night is a true reflection of how the area is actually growing. This brings us to the thing of what environmental impact cities have. Yesterday, there was a good discussion on this, and there was one person who had brought a policy by Telangana on what is called as cool roof policy. Now, we are aware that look at from rural to urban centers are generally 2 to 3 degrees centigrade higher than the corresponding nearby rural areas. The reason is that we are now energy sinks. We are absorbing a lot of energy, and through our air conditioning HVAC systems, we send that energy from inside our houses. कमरों से बाहर हम गर्म हवा फेंकते हैं, वो हवा जो है फिर ट्रैप हो जाता है, कहीं हवा चलती नहीं है, रात में स्तब्ध रहता है और पूरे रात में वही एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है. और जितना हम एनर्जी और कंज्यूम करते हैं उसी को और ठंडा करने के लिए कंज्यूम करते हैं. प्रॉब्लम हम लोग के साथ अब ये हो रहा है कि एनवायरमेंटली हमारे अर्बन आइलैंड्स सबसे ज्यादा आगे आने वाले समय में अर्बन क्लाइमेट को झेलेंगे. दूसरा इम्पैक्ट हमने क्या कर रखा है, जितने हमारे वाटर बॉडीज हैं, जितने हमारे नेचुरल ड्रेनेज और कंटूर लाइंस हैं, उसके ऊपर हमने कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं. परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वाटर बॉडीज पे बेधड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन हो गया है. इट इज द कर्स ऑफ द पब्लिक कॉमन्स एज इट इज कॉल्ड, कि पब्लिक का है गुड तो मेरा है, मैंने वहां बस स्टैंड बना दिया, मैंने वहां कुछ कर दिया, एयरपोर्ट बना दिया, सब कुछ जो मन में हम बना दिए. जो हमारे नेचुरल ड्रेनेज लाइन्स है उस पर हमने बिल्डिंग्स खड़ा कर दिए, भाई लोगों ने उसको बेच दिया. तो अब पानी जाएगा तो जाएगा कहां? और अभी आपने दिल्ली में देखा कि रिवर रिक्लेम्स इट्स ओन फ्लड प्लेन्स इवन आफ्टर सेंचुरीज. मेमोरी नहीं जाता है रिवर का, वो कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करेगा. तो कल को आपके घरों में पानी बरसात का घुसेगा, क्योंकि आप ही ने अवरुद्ध कर रखा है उसके रास्ते को. इट इज ऑल मैन मेड. हम खुद ही इसको डिजास्टर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. और हमारे अर्बन प्लानिंग में, मास्टर प्लान्स में वाटर बॉडीज थे नहीं. तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज अक्रॉस ऑल आवर मास्टर प्लान्स दैट आर अंडर प्रिपरेशन, जितने भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो दर्ज हो हमारे राजस्व अभिलेख में या गूगल अर्थ से जो दर्शाए जा रहे हो, पब्लिकली ओन्ड और प्राइवेटली ओन्ड, उसको हम अपने मास्टर प्लान के एक पूरे ब्लू लेयर में ले रहे हैं. जो नेचुरल ड्रेनेज लाइन्स हैं उसको हम ले रहे हैं, जो कंटूर लाइन्स है उसको हम ले रहे हैं, with the intent that we will prohibit construction on these layers. Similarly, जो हमारे greens हैं, whether it is publicly owned or privately owned, उसको हमको acknowledge करना है कि ये हमें protect करना है. We should try and encourage protection of both these layers in order to be environmentally sustainable, and also come out with policies which will enable the reduction of the urban climate change that is happening around us. हमारे पास क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं? कूल रूफ पॉलिसी एक प्रकार है, सोलर का हमारे रूफ टॉप का है एक हमारा प्रकार है, जो पैनलिंग है उसका हमारा प्रकार है. बिल्डिंग मटेरियल्स को कैसे एनर्जी कंजर्वेशन के तरफ हम लोग जाएं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मटेरियल विच ट्रैप्स अप हीट, वो कैसे ठंडा रखे. पुराने घरों में आप देखेंगे कि बड़े चौड़े वो उसके दीवारें होती थी जो कि कच्ची होती थी, बट वो गर्म नहीं रहते थे. जाड़ों में बहुत ज्यादा ठंडक आपको नहीं लगती थी. तो ये हम लोग सब भूलते चले गए. जो ट्रेडिशनल हमारे जो इतने हमारे सेंचुरीज ओल्ड हमारे प्रैक्टिसेस थे उसको हम भूलते चले गए और सो कॉल्ड अडेप्टिव में हम लोग गए. ये क्या हम ले सकते हैं? ऑल्सो रिमेंबर एज अ सेक्टर हाउसिंग ग्रोथ बहुत अच्छे से अभी आपने SBI के CGM साहब ने बताया, इतना 42% ग्रोथ हो रहा है हाउसिंग लोन का. जस्ट थिंक ऑफ इट, अ हाउस कोई आप कंस्ट्रक्ट कराते हैं, देर आर ऑलमोस्ट अबाउट 265 मटेरियल्स विच गो इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस.
So all these ancillary industries, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, एचवैक हो, कारपेट हो, ऑल दिस स्विचेस हो, स्विच बोर्ड्स हो, एयर कंडीशनर्स हो, ये सारे को ग्रोथ मिलता है, सारे को मोमेंटम मिलता है। एक पर्टिकुलर इंजन से ये सारा जो नेटवर्क है उसका वो भी ऊपर उठता है। तो ये एक हाउसिंग का हमारा जो रेगुलेशन है, हमारा जो ग्रोथ है, इसके तरफ हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग कुछ पॉलिसीज अभी ला रहे हैं विच विल एनेबल अस टू लिव बेटर। टीओडी पॉलिसी हमारी आ रही जिससे कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्डिंग बायलॉज में चेंज करा करके एफएआर कर बढ़ा करके परचेजेबल एफएआर के माध्यम से लोगों को थोड़ा डेंसिफिकेशन की तरफ ले जाए। कुछ अर्बन स्प्रॉल जो बढ़ रहा है जिसके कारण से एनवायरनमेंट पे भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ कॉस्ट ऑन प्रोविजनिंग ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना हम फैलेंगे बाहर उतना पर स्क्वायर किलोमीटर कॉस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा। whereas if it is densified उतना हमको कम पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन टाइम में भी हमारे कम लगेगा। But as a person who grew up in college in Mumbai, I used to travel 4 hours a day, 4 hours a day to go to college and come back. I first had to catch a BST bus from my house to catch a local train. If I missed that train, I was gone because आगे वाला जो उसका जो कनेक्शन बस था वो मेरा मिस हो जाता। So it was always, as an urban person, I understand the value of time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज का कनेक्शन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, एक आप मिस कर गए तो आपका दिन खत्म। Then by the time you reach, whatever you have set out for is over, and you have to again come back, and your entire day is gone. Totally unproductive. आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बजाय यदि आपका घर, आपका जो काम का स्थल है या आपका कॉलेज है आसपास है, तो आप 10-15 मिनट में यदि पैदल भी जाए, पेडेस्ट्रियनाइजेशन को आप एनकरेज करें, तो दैट विल एनेबल बेटर प्रोडक्टिविटी, एंड बेटर प्रोडक्टिविटी इन अर्बन एरियाज विल लीड टू हायर ग्रोथ इन द सिटीज। इसके तरफ हम लोग को देखना है, इसलिए हम लोग अपने बिल्डिंग बायलॉज को मॉडिफाई कर रहे हैं, टीओडी जोन्स को ला रहे हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को हम लोग ले आए हैं, ताकि बड़े शहरों में टीडीआर के माध्यम से, परचेजेबल एफएआर के माध्यम से अर्बन डेंसिफिकेशन की तरफ हम लोग जाएं। लिवेबल सिटीज में ग्रीन एरियाज को हम लोग ईयरमार्क कर रहे हैं, और बिकॉज इफ यू हैव टू डिस्करेज एज अ सोसाइटी कंस्ट्रक्शन इन फ्लड प्लेन्स, नहीं तो होता ये रहेगा कि हर साल जो है उसमें बाढ़ आएगी, उसमें फिर आप राहत कार्य देंगे, जनहानि होगी, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, उसका कोई लाभ नहीं है सोसाइटी एज सच को, कंट्री एज सच को। वील अननेसेसरली बी every year repeating the same exercise without any result. Lastly, इसमें जो affordability है ये बहुत important है। हम लोग का टारगेट अब नए शहरों के तरफ है। We have taken on what is called as a target for building 100 new townships and sanctioning 100 new townships before March of 31st of next year. अभी हम लोग लगभग 80 क्रॉस कर गए हैं, and we have already sanctioned 125 maps for townships, 125 maps in the state of Uttar Pradesh in less than 6 months. This is probably a record of some kind. नए टाउनशिप पॉलिसी को हम अभी लेके आ रहे हैं, उसके साथ साथ हम वी आर गोइंग टू मर्ज दिस टीडीआर और टीओडी पॉलिसी के साथ में, एंड देन हैव एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स अक्रॉस द स्टेट विद ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर, जिसमें आर्किटेक्ट्स भी हों, जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी हों, जिसमें बिल्डर्स भी हों, जिसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों, जिससे कि ये आम जनमानस में अर्बनाइजेशन के प्रति और जिस दिशा में हमको जाना है आगे वाले समय में, उसके प्रति हम लोग जागरूक हों। माननीय मुख्यमंत्री जी शहरी के योजना के अंतर्गत सीएम साहब का ये विजन है कि उन्होंने 7 नए शहरों के लिए पैसा अभी रिलीज किया है। वी रिलीज 1000 crores फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ 7 न्यू सिटीज इन द स्टेट, अगेन अ रिकॉर्ड, जिसमें 50% ऑफ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट विल बी गिवन एज सीड कैपिटल। समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स ऑक्शन फॉर लैंड की, उसमें जो लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट है एक प्रोपोर्शन का उन्होंने रिवर्स ऑक्शन करके किया है, विच इज अगेन समथिंग ऑफ एन इनोवेशन डन बाय द वाइस चेयरमैन महेंद्र, डिजर्व्स a lot of appreciation for this innovation that has come up.
We are also looking at now new townships being done by Awas Vikas Parishad. For the first time, अयोध्या में नव अयोध्या का हम लोग स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं. काफ़ी कुछ लैंड एक्विजिशन हमने कंप्लीट कर लिया है और अयोध्या जी में जब तक मंदिर बन के इनॉग्रेशन करे तैयार होगा उससे पहले हम लोग लैंड अलॉटमेंट स्टार्ट करेंगे. बाय दशहरा वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आई हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वाराणसी, जहाँ पे पिछले 30 साल में कोई नया हाउसिंग स्कीम न डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा न हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किया गया था. फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन 400 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वी हैव टेकन अप बाय द हाउसिंग बोर्ड. और नया एक जो योजना है वाराणसी के लिए हम लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं. Similarly, now the discourse has changed. A lot of public representatives come to me from what I call as tier 2, tier 3 towns. अभी मुजफ्फरनगर का डिमांड आ रहा है, अभी रायबरेली का डिमांड आ रहा है, अभी बुलंदशहर का डिमांड आ रहा है, जिसको हम लोग सोचे नहीं थे कि वहाँ पर भी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होगी. तो छोटे टाउन्स में जब अर्बनाइजेशन और वहाँ की जो हाउसिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करेंगे, तो जो ड्रेन है टुवर्ड्स बिगर सिटीज ऑफ टैलेंट फ्रॉम स्मॉलर एरियाज वो थोड़ा रुकेगा. क्योंकि आज के तारीख में एवरीबडी इज कनेक्टेड. बिजली हर जगह है, ब्रॉडबैंड हर जगह है. आप दुनिया के किसी कोने में रह करके नेट को एक्सेस करके अपना काम कर सकते हैं. तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अनावश्यक है. ये जो यदि हम कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ये अनावश्यक है. यदि मैं छोटे गांव का भी रहने वाला हूं तो मेरे पास उसका एक्सेस होना चाहिए. वी शुड हैव अ सो कॉल्ड एज अ रूरल अर्बन कंटिन्यूम. मैं जहां पर हूं वहीं पर रह करके मैं जो दुनिया में हो रहा है उसको मैं एक्सेस कर सकूं. ये विजन अभी धीरे धीरे हम लोग ला रहे हैं. एज आवास विकास परिषद वी वुड लाइक टू इनवाइट प्लेयर्स. आप में से कई लोग यहाँ पर प्लेयर्स हैं जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े. वी वुड लाइक टू इनवाइट प्लेयर्स टू पार्टनर विथ अस इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द स्टेट. एंड दिस इज, बिलीव मी, इज जस्ट द बिगिनिंग. थैंक यू वेरी मच.